और आज तो बारिश है ऊपर से, तो ठीक है. Once the recording starts, okay, recording has started, so we will begin. So last time we were discussing about graph theory. So graph theory, basically what is a graph? A graph basically consists of set of vertices, set of edges, and you can say a function which assigns to edge a subset VW of vertices. This were the following. These were the examples which we discussed. We discussed various definitions like degree of vertex. What is the degree of vertex? It is number of vertex, number of edges having that vertex as an endpoint. That is called the degree. Loop. Loop is basically an edge from a vertex to itself. Degree of the loop will be 2. Vertex with degree 0 is said to be an isolated vertex. A pair of vertices that determine an edge are called adjacent vertices. That means अगर दो vertices के बीच में edge है तो they are known as adjacent vertices. ठीक है, दो vertices के बीच में edge है तो they are known as adjacent vertices. Then we discuss about path. Path in a graph is nothing but the sequence of vertices such that each vertex is adjacent to the next vertex. The most important condition here is no edge is selected more than once. ठीक है, no edge is selected more than once for a path. तुम्हारा vertex repeat हो सकता है लेकिन edge repeat नहीं हो सकता. Circuit is a path which begins and ends with the same vertex. ठीक है, circuit is a path which begins and ends with the same vertex. That means basically what is a circuit? Circuit is the sequence of vertices v1, v2, v3, again v1, such that each vertex is adjacent to the next vertex. No edge is selected more than once. So circuit is a path which begins and ends at the same vertex. Parallel edges. Again I repeat, don't get confused between your parallel lines and parallel edges. Okay, don't get confused between your parallel lines and parallel edges. Two or more distinct edges with the same set of endpoints. Two or more distinct edges with the same set of endpoints are known as parallel edges. You can see in the diagram E1 and E5 are parallel edges because E1 and E5, they are two distinct edges between vertex 1 and vertex 2. Okay, there are two different edges between the same set of vertices. So E1 and E5 are parallel edges in the diagram. Connected graph. A graph is said to be connected if there is a path from any vertex to any other vertex in the graph. Okay, a graph is called connected if there is a path from any vertex to any other vertex in a graph. In very simple words, it means कि तुम लोग कोई भी वर्टेक्स से कोई भी दूसरे वर्टेक्स पे ट्रैवल कर सकता है. If that is the case, graph is said to be connected. ठीक है, if that is the case, graph is said to be connected. If not, to be connected, that means if you are not to travel from one vertex to another vertex in the graph, then the graph is said to be disconnected. Okay, if we have
if we have a disconnected graph, then the various pieces of the disconnected graph are said to be the components of the graph. Okay, various connected pieces of a disconnected graph are known as components of a graph. In this example, you can see the graph is disconnected, okay, and it has two connected components. एक वो triangle है loop के साथ, और right side पे you have similar to what quadrilateral, but not exactly a quadrilateral, triangle with a tail, you can say. So you have two connected components in this example. Okay. Then we discuss about a bridge. What is a bridge? Bridge is an edge. Bridge basically is an edge in a connected graph of a type कि उसको delete किया तो the connected graph becomes a disconnected graph. Again I repeat, edge is called a bridge in a connected graph if deleting that edge will result to a disconnected graph. ओके अगर कोई एक एज को डिलीट करने से कनेक्टेड प्रॉपर्टी लूज हो रहा है ग्राफ का, तो दैट एज विल बी नोन एज अ ब्रिज. ठीक है, अगेन आई रिपीट, कोई एक एज को डिलीट करने से कनेक्टेड प्रॉपर्टी लूज हो रहा है ग्राफ का, तो दैट एज बेसिकली विल बी नोन एज अ ब्रिज. In this diagram, we had seen last time that there are two bridges. One is the edge between B and D, and another one is the edge between G and F. Okay, one is an edge between B and D. Another one is an edge between G and F. सर GF एंड GF कैसे ब्रिज आया? We have a graph on 7 vertices, right? Yes. तो तुम अगर वो G and F वाला एज को डिलीट करेगा तो F becomes an isolated vertex, no? Okay, sir. इसके लिए वो भी ब्रिज है. BD, edge between B and D is clearly visible कि वो ब्रिज है because उसको डिलीट किया तो you get two big components. But G and F का edge डिलीट किया तो you get F to be an isolated vertex. तो वो एक अलग हो जाता है. That is the reason कि वो ब्रिज है. Same way see, if you consider the edge between B and C, तो वो ब्रिज नहीं है क्योंकि C isolated नहीं हो रहा है. तुम्हारे पास और एक व्हाट यू कैन से अल्टरनेट मेथड है सी पे जाने का. सेम वे अगर एज बिटवीन डी एंड ई डिलीट किया तो भी वो डिस्कनेक्टेड नहीं हो रहा है. ओके, सो एन एज is said to be a bridge if deleting that edge will result to a disconnected graph, then only it is said to be a bridge. So these were the things which we had discussed in the previous class. Today we will start with the Euler path and Euler circuit. It is, you can say, IT का language में you can say it is an upgraded version of your path and circuit. What is a path? Path means it's a sequence of vertices such that each vertex is adjacent to the next vertex with a condition no edge is selected more than once. Okay, no edge is selected more than once. Circuit means it's a path which begins and ends at the same vertex.
Now we will discuss about a Euler path and Euler circuit. What is a Euler path? Path in a graph G is said to be a Euler path. Again I repeat, path in a graph G is said to be a Euler path if it includes every edge exactly once. ठीक है, सिर्फ खाली पाथ है तो वो क्या बोलता है कि एज रिपीट नहीं हो सकता है. यूलर पाथ में व्हाट इट सेज, एवरी एज इज कंसिडर्ड एग्जैक्टली वंस. So Euler path means it's a path in which every edge is considered exactly once. मतलब कोई भी एज को तुम लोग छोड़ नहीं सकता है और कोई भी एज को रिपीट नहीं कर सकता है. ठीक है. Euler circuit is nothing but a Euler path which is a circuit. That means a Euler path which begins and ends at the same vertex is said to be circuit. Again I repeat, a Euler path which begins and ends with the same vertex is said to be a circuit. And what is a Euler path? Euler path means every edge is considered exactly once. Obviously path है तो तुम्हारा edge repeat नहीं हो सकता है, but यहाँ पे वो कंडीशन के साथ और एक कंडीशन है कि तुम्हारा edge, every edge has to be considered exactly once. ठीक है. This is what is a graph on 5 vertices, and we have an example for a Euler path which we have written. See, we have a Euler path starting from E. Okay, we have a Euler path starting from E. E से start होके D पे गया, D से start होके C पे आया, C से start होके A पे आया, A से B, B से D. This is a Euler path because you can see कोई भी edge repeat नहीं हो रहा है and कोई भी edge left out नहीं है. There are 5 edges in the graph. All the 5 edges are considered. Second example in the same thing, we have taken an example of a path. Again starting from vertex E, E से D पे गया, D से C पे आया, C से A से B. Okay, so that is what is an example of a path. Because EDCAB पाथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सब एजेस कंसिडर नहीं हो रहा है. ओके, वो पाथ है बट यूलर पाथ नहीं है. That means you can say every Euler path is a path. Okay, every Euler path is a path, but every path will not be a Euler path. Okay, I hope you are getting. Every Euler path is a path, Yes. but every path will not be a Euler path. You have an example in front of you. थोड़ा बहुत समझा यूलर पाथ? खाली इतना ही है कि ग्राफ में जितना भी एजेस है सब कंसीडर होना चाहिए एंड कोई भी एज एक से ज्यादा बार सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो यूलर पाथ होगा. This is another example where we have a graph on 7 vertices. Okay, we have a graph on 7 vertices. So in this case, we have taken the example of a Euler circuit starting from vertex F and ending at vertex F, and every edge is considered exactly once. ठीक है, तो starting from vertex F, we go to vertex E, E से D, D से C, C से A से B,
B से D और D से F. Okay, so this is an example of a Euler circuit because it's a circuit which begins at vertex F, ends at vertex F, and every edge is considered exactly once. Fine? These two things are clear about Euler path and Euler circuit. Yes, sir. Okay. See, last time if you remember, हम लोग ने जब path और circuit का example discuss किया था, so we have taken a real life example. I think काजोल का ही example हम लोग ने लिया था. वो she stays at Kanjurmarg to Sion college और college से वापस घर. So that basically becomes a circuit. But it is not it will never become an Euler circuit. Okay, because there are many different ways to reach from her place to college. इतना बड़ा भी नहीं, छोटा सा तुम लोग एरिया कंसिडर करोगे. अभी आई थिंक those who were there in SIAs in the junior college, for them it's okay क्योंकि वो कभी तो तुम लोग रेगुलरली कॉलेज जाता था. But those who have taken admission for the first time in SIAs, I think अभी एक या दो बार तो तुम लोग कॉलेज गया ही होगा करके साइंस स्टेशन से. Yes, the student who has joined SIAs for the first time, मतलब 11th 12th कोई और कॉलेज में था, FY में इधर एडमिशन लिया, तो for them it's like if you would have visited the college once or twice, I don't know exactly तुम लोग गया था कि नहीं, but अगर तुम लोग गया होगा तो you can see साइंस स्टेशन से भी कॉलेज जाने के लिए there are many different ways. I can say there are three minimum three different paths are there जिसको यूज करके तुम खाली साइंस स्टेशन से कॉलेज जा सकते हैं. तो यहाँ पे तुम लोग को है ना पाथ्स का एग्जांपल बहुत सारा मिलेगा, बट यूलर पाथ रियल लाइफ में इट इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, यू कैन विजुअलाइज, बट ऐसा कोई कॉन्क्रीट एग्जांपल देके यूलर पाथ निकालना इज somewhat difficult unless and until like in the previous lecture Kajol was telling कि सर मैप पे ही दिखा दो करके. तो मैप पे अगर तुम लोग पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर मार्क करके फिर उसको एक ग्राफ बना के करोगे तो यूलर पाथ मिलेगा. बट ऐसे ही पूरा मींस रियल में थोड़ा मुश्किल है बिकॉज पॉइंट ए टू पॉइंट भी ट्रैवल करने के लिए देयर कैन बी मेनी डिफरेंट वेज. सो यू कैन हैव अ यूलर पाथ क्योंकि सब एजेस को तुम लोग कंसिडर नहीं कर सकते. वेरी डिफिकल्ट. Okay, so this is the Euler circuit. These are four results which are very important. Okay, these are four results which are very important in particular to your multiple choice format, because all these four results will be discussing them without proof. उसका प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो भी इसका प्रूफ नहीं है तो डायरेक्टली तो आएगा नहीं करके. बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है. मल्टीपल चॉइस में तो डेफिनेटली वो आ सकता है. व्हाट इज द फर्स्ट रिजल्ट? फर्स्ट रिजल्ट टेल्स अस दैट इफ अ ग्राफ G हैज अ वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है, इफ देयर इज अ वर्टेक्स मतलब एक भी अगर वर्टेक्स है ऑड डिग्री का तो यूलर सर्किट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, एक भी वर्टेक्स अगर ऑड डिग्री का है तो यूलर सर्किट इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड रिजल्ट सेज a connected graph has a Euler circuit if and only if each vertex is of even degree. You can see the two examples which we have taken. This was an example on 7 vertices. Check करो हर एक vertex का degree is even except vertex D. सबका सब वर्टेक्स का डिग्री 2 है, खाली D का डिग्री 4 है.
ओके, डी का डिग्री 4 है, बाकी सब का डिग्री 2 है. So this is a graph in which each vertex is of even degree. So you can easily find a Euler circuit. This graph, इसमें you have a vertex of odd degree. So you can try. ये ग्राफ में कभी भी यूलर सर्किट मिलेगा ही नहीं. You can try. I'll give you 2 minutes to try for different possibilities. अभी जो ग्राफ दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे, वो ग्राफ में you have 2 vertices of odd degree. The result says अगर एक भी vertex odd degree का हुआ तो यूलर सर्किट is not possible. You can try. यूलर पाथ लिखा है, but यूलर सर्किट नहीं होगा यहाँ पे, because you have a vertex of odd degree. Yes, sir. Right? So that is why the two results are very important. You can have a Euler circuit only if every vertex is of even degree. If you have at least one vertex Sir, of odd degree, तो Euler circuit नहीं मिलेगा. हाँ बोलो. sir, means if we have this is odd degree, and if we have E as our starting point, then it should be our end point, no? E. सर्किट के लिए. Yeah, yes, Euler circuit के लिए. हाँ, सर्किट के लिए अगर E से चालू किया तो E पे खत्म होना चाहिए. Yes, sir. But in this case, see, अगर मैं अभी जो ग्राफ स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें मैं अगर B and E के बीच में अगर एक एज डाल भी दूं, ओके, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स E पे मैं एक एज डाल भी दूं तो भी मेरे को यूलर सर्किट नहीं मिलेगा. I hope you're getting my point what I am telling. B to E अगर एक एज में ड्रॉ भी कर लूं तो भी मेरे को यूलर सर्किट नहीं मिलेगा वो केस में. Yeah, because it is odd degree, no? यस, तो बी भी ऑड डिग्री का हो जाएगा और डी तो ऑलरेडी ऑड डिग्री है ही करके. Yes. Okay, so the first result says if we have a vertex of odd degree तो यूलर सर्किट नहीं है. If every vertex is of even degree then only you can have a Euler circuit. And फिर वो बायडायरेक्शनल हो जाता है. मतलब यूलर सर्किट है तो सब वर्टेक्स इवन डिग्री का मिलेगा, सब वर्टेक्स इवन डिग्री का है तो यूलर सर्किट मिलेगा. ओके. Third result says if a graph has more than two vertices of odd degree, if a graph has more than two vertices of odd degree, then there is no Euler path. Okay, if a graph has more than two vertices of odd degree, then there is no Euler path. Okay. That is the third result. Fourth result, what it says, if you have a connected graph having exactly two vertices of odd degree, then there can be a Euler path. Okay, अगर दो vertices है odd degree का exactly two, तो Euler path मिलेगा. दो से ज्यादा vertices है odd degree का तो Euler path भी नहीं मिलेगा. Again, I will go back to the first diagram. Here we were having a Euler path because you can clearly see that vertex E and vertex D, both the vertices are of odd degree.
Okay, vertex E and vertex D are the only two vertices of odd degree. बाकी तीनों vertices even degree का है. ठीक है? Okay, so these four results are clear. I will again repeat. If you have a vertex of odd degree, there cannot be a Euler circuit. Euler circuit is possible if and only if every vertex is of even degree. If you have more than two vertices of odd degree, then Euler path is not possible. You can have a Euler path provided you have exactly two vertices of odd degree. Okay, you can have a Euler path if you have exactly two vertices of odd degree. This results you can use for what you can say, checking whether the Euler circuit will exist or not. Okay, as well as a Euler path will exist or not. Next is about the coloring of a graph. Coloring means the terminology is the meaning of is coloring of a graph. It doesn't mean कि अपने को ग्राफ को पेंट करना है. It only says कि हम लोग वो वर्टेक्स को कलर करेगा. Okay. So we have G to be a graph with components V, E, and F with no multiple edges. C is a set of X colors. Okay, C is a set of X colors. That means जो C1, C2, C3 दिख रहा है, they are different colors. Like C1 may be green, C2 may be red, C3 may be black, of that kind. Okay, we have C to be a set consisting of X colors. Any function G from V to C is said to be a coloring of a graph using X colors. That means basically कि हम लोग वो वर्टाइसेस है ग्राफ का उसको कलर कर रहे हैं यूजिंग कलर्स which we have. So C1, C2, Cx is the set of the colors. उसमें से कोई कलर को यूज करके हम लोग वर्टेक्स को कलर कर रहे हैं अगर, ओके, तो that is what is basically known as a coloring. So any function G from V to C is called a coloring of a graph using X colors. Next definition is a coloring is said to be proper. A coloring is said to be proper if no two adjacent vertices V and W are of same color. Okay, a coloring is said to be proper if no two adjacent vertices V and W are of same color. That means adjacent vertices अगर different color का है, then only the coloring is said to be proper. ओके, अगेन प्रॉपर कलरिंग मतलब वो जो मतलब पेंटिंग मतलब ड्राइंग क्लासेस में बोलते हैं ना कि अच्छे से कलर करो, बराबर कलर करो, वो फिगर के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, कलर द थिंग्स प्रॉपरली. वो प्रॉपरली कलरिंग और ये प्रॉपर कलरिंग इज डिफरेंट. यहाँ पे इफ two adjacent vertices are of different color, coloring is said to be proper. This is one of the example. We have a graph on 5 vertices. This is an example of proper coloring of a graph using 3 different colors.
Okay, this is an example of a graph with proper coloring with three different colors. You can see कोई भी adjacent, sorry, कोई भी adjacent vertex सेम कलर का नहीं है. चलिए move on to the second example. Yes, sir. Okay. Again, this is an example similar to the previous one with three different colors. खाली हम लोग ने कलर को चेंज कर दिया. जो लेबलिंग है वो चेंज हो गया बेसिकली. नहीं सॉरी, यहाँ पे चार कलर्स यूज कर रहे हैं ना हम लोग. एक दो तीन, तीन ही है. ओके, ऊपर भी तीन ही था. हाँ, तो फिर मैंने ये क्यों दिया? ओके, व्हाट आई विल डू इज मैं इसको चेंज कर देता हूँ. ठीक है. नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी we have the same graph as of the first example, but यहाँ पे we are using four colors to obtain the proper coloring of the graph. ठीक है. पहला जो एग्जाम्पल था उसमें तीन कलर यूज करके प्रॉपर कलरिंग आया. इसमें चार कलर यूज किया हमने प्रॉपर कलरिंग के लिए. Next is the definition for a chromatic number. Chromatic number says the minimum number of colors required to obtain a proper coloring of a graph is said to be the chromatic number. Okay? Minimum number of colors required to obtain the proper coloring of a graph is said to be the chromatic number of the graph. Again I repeat, वहां पे डेफिनेशन में अलग वर्डिंग्स यूज किया है. आई एम टेलिंग उसका मीनिंग के साथ. डेफिनेशन तो फॉर्मल है. स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कलर्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर कलरिंग ऑफ अ ग्राफ. मीनिंग उसका वही है. मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स required to obtain a proper coloring of a graph is said to be the chromatic number of the graph. The two examples which we had seen, both the examples में same graph है. First में we are getting a proper coloring using three different colors. Second में we are getting the proper coloring using four different colors. तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा? इसका क्रोमेटिक नंबर विल बी 3. 4 नहीं होगा, because you can obtain a proper coloring with 3 colors, and that is the minimum number of colors required to obtain the proper coloring. 3 से कम कलर में तुम लोग को प्रॉपर कलरिंग नहीं मिलेगा. यू कैन चेक. अगर तुमको डाउट है तो द ग्राफ इज देयर ऑन द स्क्रीन. यू कैन चेक. whether you get a proper coloring using 2 colors. No, sir, we can't get. Right, so minimum we require 3 colors to obtain a proper coloring. So for this graph the chromatic number will be 3. Okay, for this graph the chromatic number will be 3 because we require minimum 3 colors for obtaining the proper
coloring of the graph. This much is clear? Yes, sir. Next is the definition of the chromatic polynomial. Chromatic polynomial says if we have a graph G and we have set of X colors. Okay, again I repeat, if we have a set of X colors, then the chromatic polynomial is the number of ways to properly color G. Okay, to properly color G using X or fewer colors. Again I repeat, if we have a graph G and set of X colors, the chromatic polynomial is the number of ways to properly color G using X or fewer colors. That means using X or less than X colors. This is denoted as P suffix G of X. Okay, it is denoted by P suffix G of X. Again I repeat, chromatic polynomial is the number of ways to properly color the graph G using X or less than X colors. What is chromatic number? Chromatic number is the minimum number of colors required to obtain a proper coloring of a graph. Okay, it is the minimum number of colors required to obtain a proper coloring of a graph. That is what is the chromatic number. Chromatic polynomial is the number of ways to properly color G using X or less than X colors. Using chromatic polynomial, we can find the chromatic number. How we can do, I will tell once we discuss an example. First example, we have a graph with 6 vertices. Okay, we have a graph with 6 vertices. We have to find out the chromatic polynomial as well as the chromatic number. So in the diagram, what you are seeing, the first vertex को कलर करने के लिए कितना पॉसिबिलिटीज है अपने पास x पॉसिबिलिटीज है, because in C we have x as a cardinality of C. Okay, so first vertex को कलर करने के लिए we have x possibilities. Second vertex को कलर करने के लिए we have x minus 1 possibilities. See वो जो x minus 1 लिखा है, that x minus 1 does not represent any color. It represents the number of ways in which you can color a vertex. So first vertex को you can color using x colors. Second vertex को you can color using x minus 1 color. क्यों? क्योंकि first vertex का color और second vertex का color same नहीं होना चाहिए. Third vertex को color करने के लिए again you will have x minus 1 possibilities. ठीक है, third vertex को color करने के लिए again you will have x minus 1 possibilities. Why? Because third vertex का color has to be different from second vertex का color, but third vertex का color can be same as second vertex का color, first vertex का color. Okay, third vertex का color can be same as first vertex का color, but it has to be different from second vertex का color. Okay, same way if you come to the fourth vertex,
फोर्थ वर्टेक्स का कलर हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम वर्टेक्स 3 का कलर। इसके लिए उसके लिए भी x-1 पॉसिबिलिटीज है। फिफ्थ के लिए भी सेम रीजन है, सिक्स्थ के लिए भी सेम रीजन है। तो यहाँ पे योर क्रोमेटिक पॉलिनोमियल will be x into x-1 raised to 5. Okay, chromatic polynomial will be x into x-1 raised to 5. जो भी पॉसिबिलिटीज मिलता है सबको मल्टीप्लाई करना है क्रोमेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। ओके, जो भी पॉसिबिलिटीज मिलता है सबको मल्टीप्लाई करना है क्रोमेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। And chromatic number. See, by seeing the diagram, can you say कि कितना मिनिमम कलर्स लगेगा उसको प्रॉपर कलरिंग के लिए? By seeing the graph, can you say कि मेरे को उसको प्रॉपर कलरिंग करना है तो मिनिमम कितना कलर लगेगा? Yes, no one? See, you can use say first vertex को मैंने अगर ब्लू कलर किया तो सेकेंड वर्टेक्स ब्लू कलर हो सकता है। फर्स्ट वर्टेक्स को अगर मैंने ब्लू कलर किया तो सेकेंड वर्टेक्स ब्लू हो सकता है? नो सर। नहीं, बिकॉज अगर वो ब्लू हो गया तो प्रॉपर कलरिंग नहीं मिलेगा। थर्ड वर्टेक्स, सो से फॉर एग्जांपल सेकेंड वर्टेक्स को मैंने ग्रीन कलर किया तो फर्स्ट वर्टेक्स ब्लू, सेकेंड वर्टेक्स ग्रीन। थर्ड वर्टेक्स ग्रीन हो सकता है? नो सर। बट वो ब्लू हो सकता है? यस। Yes, that means third vertex का color has to be different from second vertex का color, but it can be same as color of the first vertex. The reason first and third vertex are not adjacent, so like that you can check यहाँ पे the chromatic number will be 2 because minimum you will require 2 colors for properly coloring of this graph. ओके, ये एक टेक्निक हो गया क्रोमेटिक नंबर फाइंड करने का। दूसरा टेक्निक क्या होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, smallest value of x for which the chromatic polynomial is non-zero. Okay, smallest value of x for which the chromatic polynomial is non-zero. That will basically give you the chromatic number. Okay, again I repeat, the smallest value of x for which the chromatic polynomial is not zero is your chromatic number. You can see chromatic polynomial अपने को मिला x into x-1 raised to 5. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या है जिसके लिए वो नॉन जीरो रहेगा? अगर x को 1 डाला तो 0 हो जाता है और x को 2 डाला तो वो नॉन जीरो है। So 2 is the smallest value of x for which the chromatic polynomial is non-zero. तो chromatic number हो गया उसका 2। यहाँ पे x को हम 0 नहीं ले सकता है क्योंकि वो तो chromatic polynomial के डेफिनेशन में ही दिया है कि C is the set of x colors where x is greater than 0.
ओके, तो x तो 0 नहीं है, that means x is some positive integer, basically it's a natural number. तो chromatic polynomial में the smallest value of x for which the chromatic polynomial is non-zero, that basically will give you chromatic number. Fine, this till this it's fine. Yes, sir. Okay, we go to the next example. This is what this is the second example, sort of a triangle, sorry, rectangle. So we have to obtain the chromatic polynomial and chromatic number of the graph. So chromatic polynomial, first vertex we color with x colors, that means first vertex के लिए we have x possibilities. Again I repeat that x minus 1, x minus 2 does not represent any color. It just represents the number of possibilities. Okay, this is just is representing the number of possibilities. So first vertex के लिए we have x possibilities. ये x colors में से कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वर्टेक्स फर्स्ट है तो अपने पास x possibilities है. If you come in the right direction, your second vertex will have x minus 1 possibilities. क्योंकि ये second vertex का color has to be different from the first vertex. Come down to third vertex. Third vertex in this case will have x minus 2 possibilities. Okay, third vertex will have x minus 2 possibilities. Why? Because in this case your vertex 3 is adjacent to vertex 1 as well as vertex 2. Okay, vertex 3 is adjacent to vertex 1 as well as vertex 2. That means vertex 3 का color has to be different from vertex 1 and vertex 2. इसके लिए दो कलर्स मेरा माइनस हो गया ओवरऑल कलर में से, इसके लिए मेरे को x minus 2 मिला. I come to the left direction, that is the last vertex. Again in this case I will have x minus 2 possibilities because this fourth vertex is adjacent to vertex 1 and vertex 3. In addition to that, 1 and 3 are also adjacent. That means 1 and 3 has to be of different colors. So जो मेरा vertex 4 है, it should be a vertex with color different from vertex 1 and vertex 3. इसके लिए वापस मेरा दो possibilities कम हो जाता है. So I get x minus 2 possibilities. तो यहाँ पे मेरा जो chromatic polynomial है, that will be x minus 1, x minus 2 the whole square. जो भी मेरा possibilities आता है colors का, उसको multiply करना है मेरे को. ओके, उसको multiply करना है मेरे को. Right? Is this clear? Yes, sir. One important thing, see, when we are basically doing this, what you can say, chromatic polynomial, chromatic number, jump नहीं करना है. ओके, जंप नहीं करना है, एक ऑर्डर में ही जाना है, बीच में जंप नहीं मारना है.
दैट मीन्स 1 से 2, 2 से 4 पे नहीं आना है. ओके, और अदरवाइज क्रोमेटिक नंबर में तो चेंज नहीं होगा, बट क्रोमेटिक पॉलिनोमियल में स्लाइड चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ. ओके, डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ. वो अगर जंप मारा तो डिस्प्ले पर्पस में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बट क्रोमेटिक नंबर विल नॉट चेंज. यहाँ पे कैन यू टेल व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर? 3. 3. Right, because 3 is the smallest value of x for which the chromatic polynomial is non-zero. x को 1 डाला तो भी 0 होता है, 2 डाला तो भी 0 होता है, और 3 डाला तो 0 नहीं होता है. So 3 is the value of the chromatic number. Okay, can you tell the answer for this third sum for chromatic polynomial as well as chromatic number? अभी यहाँ पे जो 1 2 3 4 है वो तुम्हारा वर्टेक्स का नंबर से, लेबल से. Try to find out the answer of third sum. If any one of you gets the answer, just let me know. So we have to write as 1 into 2 into 3 into 4. They are just the labels of your vertex. It is not your color. It is label of your vertex. Okay. Because the reason also I will tell you कि क्यों लिखा है वो. But first you get the answer as per the diagram which is there. उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या डिफरेंस होगा करके अगर वो नंबर्स नहीं लिखा या वो नंबर्स को चेंज किया तो. So x into x minus 1, x minus 2 raised to 2.
Okay, x minus 1, x minus 2 the whole square. So your chromatic number will be 3. Right? Yes, sir. Okay. ठीक है. What about others? Anyone else has got the answer? Anyone else? और किसी को नहीं मिला आंसर? Think. Yes, काजोल, हिमाक्षी, आकांक्षा, आंसर मिला. और वो अभिषेक था ना लास्ट टाइम जो आंसर अच्छे से दे रहा था. है क्या वो? ओके. सो ऐसे से ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर लिखा है वर्टाइसेस का, वो ऑर्डर को फॉलो करेगा तो वी गेट द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल एज x minus 1 into x minus 2 the whole square. ओके. अभी मैं अगर ऑर्डर चेंज करता हूं, ओके, मैं अगर अभी ऑर्डर चेंज करता हूं तो मेरा क्रोमेटिक पॉलिनोमियल चेंज होगा, बट क्रोमेटिक नंबर चेंज नहीं होगा. ठीक है, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल चेंज हो सकता है बट क्रोमेटिक नंबर चेंज नहीं होगा. लाइक से अगर मैंने फर्स्ट वर्टेक्स को x लिया, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स 1, तो 1 के लिए मेरे पास है x minus 1 पॉसिबिलिटी. ठीक है, 1 के लिए मेरे पास है, सॉरी, वर्टेक्स 1 के लिए आई हैव x पॉसिबिलिटीज. देन instead of going to vertex 2, if I go to vertex 3, okay, if I go to vertex 3, तो वो हो गया मेरा x minus 1 पॉसिबिलिटीज वर्टेक्स 3 के लिए. ओके, अगेन आई रिपीट, स्टार्टिंग विथ वर्टेक्स 1 के लिए वी विल हैव x पॉसिबिलिटीज. वर्टेक्स 3 के लिए वी विल हैव x minus 1 पॉसिबिलिटीज. Then I go to vertex 4, तो अगेन आई विल हैव x minus 1 पॉसिबिलिटीज. क्योंकि 1 एंड 4 का कलर सेम हो सकता है. 4 का कलर हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम 3. तो 4 के लिए आई हैव x minus 1 पॉसिबिलिटीज. एंड नाउ व्हेन आई कम टू वर्टेक्स 2, तो मेरे को मिलेगा x minus 2 पॉसिबिलिटीज. तो ये केस में क्रोमेटिक नंबर सेम रहेगा बट मेरा क्रोमेटिक पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी x minus 1 the whole square into x minus 2. Okay, again I repeat, chromatic polynomial depends, sometimes it depends on the order in which the vertex is selected. So in the same example,
if I'm not wrong, earlier answer was given by Sweetie. So the answer given by Sweetie is correct. The way in which the vertices का order लिखा हुआ है, एक 1 2 3 4. तो vertex 1 के लिए x colors, 2 के लिए x minus 1 color, 3 के लिए x minus 2 color, and 4 के लिए भी x minus 2 possibilities. Color मतलब possibilities. But अभी मैं vertices का order change करता हूँ. से 1 से start किया. I have x possibilities. I come to 3, जहाँ पे I will have x minus 1 possibilities. I go to 4, जहाँ पे again I will have x minus 1 possibilities. And then I come to vertex 2, जहाँ पे I will have x minus 2 possibilities. तो मेरा chromatic number same रहेगा, but chromatic polynomial change हो जाएगा. That will be x minus 1 the whole square and x minus 2. So sometimes the chromatic polynomial will change depending on the order of the vertex which you are taking. Okay, depending on the order of the vertex which you are taking. Is this fine? Yes, sir. Okay. I will just try. ये डायग्राम मेरे घर बैठेगा नहीं ना. ठीक है, थोड़ा अलाइनमेंट का इश्यू है, but it's okay. Next is graph is said to be complete. This is basically the definition of a complete graph. A graph is said to be complete if every vertex is connected to every other vertex. Okay, a graph is said to be complete if every vertex is connected to every other vertex. The two diagrams, two examples are given. A complete graph is denoted by Kn. Okay, complete graph is denoted by Kn. We have example of K3 and K4. K3 is basically a triangle, a complete graph on 3 vertices. K4 is basically, you can say, a rectangle with 2 diagonals. हाँ, यहाँ पे it's very important कि जो दो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे वर्टेक्स नहीं है. ठीक है, दो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे वर्टेक्स नहीं कंसीडर किया है, नहीं तो इट विल बिकम अ ग्राफ ऑन 5 वर्टाइसेस. ठीक है, a graph is said to be complete if every vertex is connected to every other vertex. Connected means by an edge, not by a path. Okay, connected means connected by an edge and not by a path. These are examples of K3 and K4. K5 के लिए okay, K6 के लिए you can visualize of an hexagon जहाँ पे every vertex is connected to every other vertex. Okay. Next, we try to generalize the formula for the chromatic polynomial as well as the chromatic number of a complete graph. Okay, we try to generalize the formula for the chromatic polynomial and chromatic number for the complete graph. So what I will get for K3, can you tell what is the answer for chromatic polynomial? X into x minus 1, x minus 2. Very good. It is x into x minus 1 into x minus 2. So what will be the chromatic number? 3. 3. Very nice.
Chromatic polynomial is x minus 1, x minus 2. Chromatic number is 3. क्या हो गया? हाँ, K4 के लिए So the same thing can be written down also, no? हाँ वो K4 है. ओके, यहाँ पे K3 लिखे, K4 है. Chromatic polynomial of K4 So we want to consider only the edges, right? हाँ वर्टाइसेस, पॉलिनोमियल के लिए वर्टाइसेस करना पड़ेगा ना. तो 4 वर्टाइसेस जो कॉमन वर्टाइसेस है वही दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं. डोंट कंसीडर दैट एज अ वर्टेक्स. X into x minus 1, x minus 2. And x minus 3. Chromatic number will be 4. Right? So I think now the general formula for your chromatic number and chromatic polynomial. Wait a second. This is what is your answer. General formula for the chromatic polynomial of a complete graph is x minus 1, x minus 2 till x minus n minus 1. And the chromatic number will be n. Okay, chromatic number will be n. So you can just generalize from K3 and K4. So can you explain the K4 thing? Why it's K4, first of all, as I said, जहाँ पे दो diagonals intersect हो रहे हैं, वहाँ पे vertex नहीं consider करना है. Okay? So you have only 4 corner vertices. तो अभी जहाँ पे ये कर्सर दिख रहा है, that is your vertex 1. तो वहां से चालू किया तो vertex 1 के लिए you will have x possibilities. Okay? Vertex 1 के लिए you will have x possibilities. You come in the right direction, this will be your vertex 2. इसके लिए you will have x minus 1 possibilities. This much is okay? Yes, sir. You come down, this can be treated as vertex 3. इसके लिए you will have x minus 2 possibilities. Why? Because इसका color has to be different from 1 and 2 का color, क्योंकि वो तीनों adjacent है एक दूसरे से. And now when you come to left, this will be x minus 3 का number of colors, because इसका जो color है it has to be different from 1, 2 as well as 3. तीनों से अलग होना चाहिए और वो तीनों का कलर अलग अलग है, इसके लिए x minus 3 भी है. Okay, sir. ठीक है. And chromatic number, the smallest value of x for which the chromatic polynomial is non-zero. So we get the answer as n in general. K3 के लिए 3 मिलेगा, K4 के लिए 4 मिलेगा. So why there you have written n minus 1?
हाँ in general. सी जब मैं K3 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्रोमेटिक पॉलिनोमियल का, तो K3 में कितना वर्टाइसेस है? 3. और मेरा पॉलिनोमियल क्या है? x, x माइनस 1, x माइनस 2। तो 3 और 2 का रिलेशन क्या है? 3 is 2 minus, sorry, 2 is 3 minus 1 ना? Yes, sir. Again same thing you can observe for K4. x minus 1, x minus 2, x minus 3. So what is this 3? 3 is 4 minus 1. Okay, sir. That is the reason कि जनरलाइजेशन में जब k n के लिए लिख रहे हैं तो लास्ट टर्म में x माइनस n माइनस 1 मिलेगा. फाइन. Yes, sir. Okay. I hope you have seen both the diagrams, right, for K3 and K4. दोनों डायग्राम्स अच्छे से देखा ना? Yes, sir. Every vertex is connected to every other vertex by means of an edge. So homework is draw graph of K5 and K6. We'll have to draw graph of K5 and K6. That is your homework part. Okay, I'll take this down. Okay, simple graph. A graph is said to be simple if it does not have any loop or parallel edges. Okay, graph means simple graph means it is a graph which does not have a loop and does not have a loop or parallel edges. Parallel edges we had seen, आज भी हम लोग ने रिवाइज किया वो डायग्राम जो था E1 and E5 where the parallel edges, because E1 and E5 where the two distinct edges having same vertices as the end point. Okay, E1 and E5 were the parallel edges because they were the two edges with the same vertices. So this is an example of a simple graph. Simple means no loop, no parallel edges. Okay. Next is Hamilton path. Sir, Yes. sir, in that homework only we have to draw, no, not we have to not write the chromatic polynomial and number. No. We have written the general formula, so that doesn't make sense. वो तुम लोग वो formula में n का value डाल के easily मिल जाएगा. Like you can orally tell K5 का chromatic number क्या होगा? 5. 5 और K6 का 6. नहीं. हाँ बट ये तुम्हारा मल्टीपल चॉइस में आ सकता है. लाइक K7, व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ K7? उसका ऑप्शंस भी मैं बोल देता हूँ. मींस आई एम नॉट टेलिंग कि ये क्वेश्चन आएगा. इट इज जस्ट एन एग्जांपल. तुम लोग जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है ना कि सर कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे तुम लोग ने भी पूछा था टेस्ट के पहले. सो in that case this is one of the type. What is chromatic number of K7? So options may be 6, 7, 8 and say 9, something of that thing. So K7 ka chromatic number will be 7. Okay. So see, again I repeat, मैं तुम लोग को multiple choice में
बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता हूँ कि आई कांट गिव यू see I can give you a graph of this kind, okay, a graph of this type, and I can ask you what is the chromatic polynomial. वैसा क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, बट आई कांट आस्क यू बिग सम्स. यहाँ पे ये है व्हाट यू कैन से ग्राफ दिया है और उसका यूलर सर्किट फाइंड करो, वैसा सब क्वेश्चन आई कांट आस्क फॉर मल्टीपल चॉइस. इसके लिए अभी तक हम लोग ने वो टाइप के सम्स भी नहीं किए. इफ यू वुड हैव एक्सपीरियंस, हम लोग ने कोई भी ग्राफ का यूलर सर्किट फाइंड करने का एग्जांपल नहीं किया अभी तक, अदर देन दैट छोटू मोटू एग्जांपल्स था. ओके, सिंपल ग्राफ, again I repeat, it's a graph which does not have any loop or parallel edges. Next is Hamilton path and Hamilton circuit. What was your Euler path? Euler path means every edge has to be considered exactly once. But वहां पे तुम्हारा vertex repetition allowed था Euler में. Hamilton में what it says, Hamilton path is a path that contains each vertex exactly once. ठीक है, that contains each vertex exactly once. मतलब Hamilton path में तुम्हारा vertex cannot be repeated. Euler path में तुम्हारा circuit तुम्हारा edge cannot be repeated. ठीक है, again I repeat, Euler path में edge repeat नहीं हो सकता है, Hamilton path में vertex repeat नहीं हो सकता है. So Hamilton path is a path that contains each vertex exactly once. Hamilton circuit is a circuit that contains each vertex exactly once except the first and the last vertex, which will be same क्योंकि वो circuit है. ठीक है, Hamilton circuit is a circuit that contains each vertex exactly once except the first and the last vertex. Okay, तो यूलर पाथ और हैमिल्टन पाथ में कॉमन क्या है कि दोनों पाथ होना चाहिए. ओके, दोनों पाथ होना चाहिए मतलब यू कैनॉट रिपीट योर एज. ठीक है, यूलर में क्या है, यूलर बोलता है कि मेरा सब एज एक बार कंसीडर होना चाहिए. हैमिल्टन बोलता है मेरा सब वर्टेक्स एक बार कंसीडर होना चाहिए. मतलब हैमिल्टन पाथ में अगर तुम्हारा कोई एज मिस आउट भी हो गया कंसीडर करने का तो चलेगा, बट वो होगा नहीं करके. ओके, एक एज मिस आउट हो गया तो वो चलेगा, बट यूलर पाथ में एज मिस आउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, इज दिस क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन योर यूलर पाथ एंड हैमिल्टन पाथ? Yes, sir. Okay, this is an example. Sorry, this is an example in which we can have a Hamilton path, but we cannot have a Hamilton circuit. We have written the example. See, path starting from vertex A से B पे गया, B से C पे गया, C से D पे गया और D से E पे गया. So that becomes a Hamilton path. This is not a Euler path. Can you say why it is not a Euler path? Because it is odd degree. It has odd degree. वो तो दो ही वर्टेक्स है ना odd degree का. जो अभी एग्जांपल हम लोग ने लिखा है पाई का, वहां पे इट इज रिटन कि इट्स अ हैमिल्टन पाथ. दैट पाथ आई एम आस्किंग कि वो यूलर पाथ नहीं है, क्यों नहीं है करके. वो हैमिल्टन पाथ है बिकॉज एवरी वर्टेक्स इज कंसीडर्ड, बट वो यूलर पाथ नहीं है. ओके, वो यूलर पाथ नहीं है बिकॉज
the edge between vertex B and E is not considered in this. Edge between vertex B and E is not considered. इसके लिए वो यूलर पाथ नहीं है, बट वो हैमिल्टन पाथ है क्योंकि सब वर्टेक्स मेरा कंसिडर हुआ वहां पे. In this graph, Hamilton circuit does not exist because I cannot start with a vertex and ends with the same vertex by considering every vertex exactly once. Second example, you can see you can have a Hamilton path as well as you can have a Hamilton circuit starting from vertex A, ending at vertex A. So A, B, C, D, A. Again I repeat, A, B, C, D, A. So this is an example of a Hamilton circuit. A, B, C, D. A, B, C, D is an example of a Hamilton path. Okay. Before we go to the next example, सेकेंड एग्जाम्पल में जो हैमिल्टन सर्किट का हम लोग ने लिखा है पाथ, इज इट अ यूलर सर्किट? ये जो ए बी सी डी ए हम लोग ने लिखा है, इज इट अ यूलर सर्किट? Yes. Yes. आई एम आस्किंग, इज इट अ यूलर सर्किट? वो हैमिल्टन सर्किट तो है, but is it? Yes, it is a circuit. Confirm? Yes, sir. Okay. Anyone else? No, sir, because B and D has an odd digit. Right, you cannot have a Euler circuit in this graph because you have vertex of odd degree. Right, that is one thing जो result बोलता है अपने को. And Kajol, you missed out one thing. हम लोग ने A B C D A जो लिखा हैमिल्टन सर्किट का, जो ये पार्ट जो सर्किट है स्टार्टिंग फ्रॉम A, हम लोग B पे गया, B से C पे आया, C से D पे आया और D से वापस A पे गया. तो उसमें तुम्हारा एज बिटवीन बी एंड डी कंसिडर हुआ? Yeah, yes. Sorry, sorry. कंसिडर नहीं हुआ तो वो यूलर सर्किट That नहीं हो only I सकता. missed. ओके, तो वो यूलर सर्किट नहीं हो सकते. ठीक है. Yes, sir. ओके. Fine. You want a break for 2 minutes? Then we can have a break and then we will continue. Or shall we continue? Whatever you say. Sir, break. ठीक है, तो we'll have a break for 2 minutes. So से 5:03 को हम लोग चालू करेगा वापस.
Okay, shall we begin? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next is we discuss about the handshaking lemma, which is also known as the handshake theorem. Again, we will not discuss the proof of this, though the proof is simple, but we will not discuss क्योंकि मोस्टली अगर एमसीक्यू है तो प्रूफ आएगा नहीं, so that is the reason I will avoid the proof. What it says, if G is any graph, then sum of the degrees of all the vertices of G will be equal to twice the number of edges. Okay, again I repeat, if G is any graph, then sum of the degree of all the vertices of G will equal to the twice the number of edges. मतलब जितना भी तुम्हारा टोटल होगा डिग्रीज का will be same as 2 times the number of edges of the graph. So it says summation of degree of vi, where I goes from 1 to n, is 2 times the number of edges of G. Okay, so I'll try to explain you with respect to this diagram. और एक मिनट है मेरे पास कोई नीचे एग्जांपल. Okay, I don't have. Fine. I'll try to explain you with this example. In this example, the one which is seen on the screen, how many vertices you have? 4. 4. Four. How many edges you have? 4. 5 edges, right? Edges are 5. Okay. Now we can see that we have a graph on 4 vertices and 5 edges. What is vertex A ka degree? What is vertex A ka degree? Even. Sorry? Even degree. नहीं, even ठीक है. What is the value? 2. 2. Very good. B ka? 3. C? 2. D? 3. 3. So these are the degrees of my 4 vertices. A ka 2, C ka 2, B and D का डिग्री 3 each. अभी ये सबको ऐड किया तो टोटल कितना आता है? 10. 10, right? And you have 5 edges. So what does the theorem says? कि degree of the vertices उसको ऐड किया, टोटल किया, so you get the answer as 10. Number of edges are 5. So 5 into 2 again gives you 10. Because that is what it says, na? 2 times the number of edges. Okay? So this is what is the verification. This is not the proof. Again I repeat, this is not the proof. This is just the verification. Proof बोला तो उसको in general prove करना पड़ेगा. So that also can be done. See, you can label the edges as you said 5 edges है ना? तो E1, E2, E3, E4 उसको label करो. E1, suppose if you say E1 is an edge between vertex A and B. ठीक है? E1 is an edge between vertex A and B. Are you able to visualize this? What I am telling? E1 is an edge between vertex Yes. A and B. Now ये E1 अगर edge है between vertex A and B. Sorry. E1 is an edge between vertex A and B. So when you consider the degree of the vertex, say you said vertex A का degree 2 है, correct?
वर्टेक्स ए का डिग्री 2 है, वो 2 क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ योर एज E1 and E5. Suppose E5 is an edge between A and B, A and D. तो इसकी वजह से A का डिग्री 2 हो गया, राइट? सेम वे इफ यू गो टू वर्टेक्स B, तो वर्टेक्स B का डिग्री यू सेड इट इज 3. वो 3 में से एक डिग्री तुम्हारा E1 करस्पॉन्ड कर रहा है, राइट? That means if E1 is an edge between vertex A and vertex B, तो E1 का कंट्रीब्यूशन वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स B का डिग्री में दोनों में होगा, एंड दैट कंट्रीब्यूशन विल बी ऑफ 1 ईच फॉर डिग्री ऑफ वर्टेक्स A as well as डिग्री ऑफ वर्टेक्स B, राइट? Again I repeat, if E1 is an edge between vertex A and B, तो E1 का कंट्रीब्यूशन होगा डिग्री ऑफ वर्टेक्स A में भी as well as degree of vertex B में भी, right? Yes, sir. That is the main reason कि जो हम लोग को मिल रहा है, sum of the degree of the vertices is 2 times the number of edges. That is the reason कि एक edge 2 vertices का डिग्री में contribute करेगा. तो you can say कि इसके लिए वो 2 बार काउंट हो रहा है. ओके, E1 तुम्हारा A में भी काउंट करेगा, B में भी काउंट करेगा. तो E1 बेसिकली इनफॉर्मली यू कैन से कि 2 बार कंसीडर होगा. इसके लिए वी गेट सम ऑफ द डिग्रीज एज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस. दैट इज जस्ट द आइडिया ऑफ द प्रूफ. ओके, नाउ वी कैन हैव an example based on this handshaking lemma. If G is a graph with 5 vertices and 10 edges, if G is a graph with 5 vertices and 10 edges, what is the sum of degree of vertices of G? Straightforward application of this theorem. Sum of the degrees will be 2 times the number of edges. Okay, sum of the degrees would be 2 times the number of edges. So मेरा number of edges is 10. So sum of the degrees will be 20. Again, you can expect a question in MCQ format based on this handshaking lemma. Okay, you can expect a question based on your handshaking lemma. Okay, sir. Fine. So I hope this is clear. Sum of the degrees is 2 times the number of edges of the graph. Yes, sir. Okay, next is we go to the idea of a tree. Tree means not the trees which we see on the road. Tree is basically a graphical representation of a set with a relation T. If you recollect, हम लोग ने directed graph देखा था, right? Directed graph was a pictorial representation of a relation. Similar to that, we have a tree which is a pictorial representation of a symmetric relation. See, जो directed graph है और graph है, what is your directed graph? Is a pictorial representation of a relation. Okay, whereas your graph is also a pictorial representation, you can say, of a relation, but of a symmetric relation. क्यों symmetric है वो? क्योंकि symmetric क्या होता है? If x is related to y, then y is related to x.
तो हम लोग ने जो डायरेक्टेड ग्राफ का टर्मिनोलॉजी देखा था, वहां पे व्हाट वाज द केस, यू हैव एन एज फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी if and only if A is related to B. Okay, you have an edge from vertex A to vertex B if and only if A is related to B. सेम अगर वो सिमेट्रिक हुआ रिलेशन, तो अगर A is related to B है तो obviously B will be related to A, right? If A is related to B and the relation is symmetric, so B has to be related to A. So that means I will have an edge from B to A. मतलब मेरा A से B पे भी edge होगा, B से A पे भी edge होगा, and this will be true for all the vertices of the graph because वो relation symmetric है. All the vertices मतलब जो ये condition satisfy करेगा x related to y का. So in that case you can remove that arrow और दो edges की जगह पे एक edge draw कर दो, क्योंकि वो फिर बाय डायरेक्शनल हो जाता है ना, ए टू बी भी जा सकता है, बी टू ए भी जा सकता है करके. इसके लिए देन यू कैन से कि माय डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर फ्री टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज बी टू ए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, ओके. सो नाउ वी कम टू अ ट्री. ट्री इज लाइक A is a set, T is a relation on A. We say T is a tree. See, generally we denote the relation by R. यहाँ पे हम लोग T से denote कर रहे हैं because we are talking or we are, you can say, using the terminology of a tree. तो इसके लिए हम लोग ने T लिया. So T is a tree if there is a vertex V0 in A with the property that there exists a unique path in T from V0 to every vertex in A, but no path from V0 to itself. Okay, again I repeat, T is a tree if there is a vertex V0 in A with the property that there exists a unique path in T from V0 to every other vertex in A, but no path from V0 to itself. Okay, no path from V0 to itself. If such a kind of a vertex exists, that vertex is basically known as the root of the tree, and that tree is referred as a rooted tree. Okay, if such kind of a vertex exists, then that is known as a root of the tree, and that T is then referred as a rooted tree. So what is a rooted tree? It's a tree with a root. Root means it's a vertex with the property that there exists a unique path from vertex to every other vertex, but there is no path from V0 to itself. I think I had a diagram also. Let me check. यहाँ पे तो नहीं है. Just a second. I will check. नहीं डाला था डायग्राम. ठीक है.
नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, ये बाइनरी ट्री का एग्जांपल करेंगे तो अपने को डायग्राम मिल जाएगा. बाइनरी ट्री मींस इट्स अ ट्री विथ ऑल वर्टिसेस of degree 2 except the vertex at the bottom level. ठीक है, बाइनरी ट्री मींस इट्स अ ट्री in which every vertex will be of degree 2 except the vertex at the bottom level. The thing would be clear once we come to this example. So we have to consider the binary tree for the given equation. Okay, we have to consider the binary tree for the given equation. So what we have, the equation 3 minus 2 into x plus x minus 2 minus 3 plus x. I had previous means beforehand only I have drawn the diagram, because drawing this type of a diagram takes some time, so I didn't wanted to waste the time just by drawing the diagram. So you can see कि ये जो expression है 3 minus 2 into x plus x minus 2 minus 3 plus x. In this case, this addition, ये जो addition का sign है, this plus operator acts as my central operator. ठीक है, this plus operator acts as my central operator, because उसके left में एक expression है और उसके right में एक expression है. ठीक है, so that acts as a central operator. This central operator basically will become my root. Okay, this central operator basically will become my root. तो ये मेरा root हो गया. इसका you can say there will be two branches. One will be on the left and one will be on the right. Left में जो branch है, that will basically correspond to the expression on the left of that plus sign. Right में जो branch है, that will basically correspond to the expression on the right of that plus sign. Is this clear? Again I repeat, we have an expression जहाँ पे you can see कि जो plus है, that plus basically becomes a central operator, क्योंकि उसके लेफ्ट में मेरे पास एक एक्सप्रेशन है और उसके राइट में मेरे पास एक एक्सप्रेशन है. तो वो प्लस will become my central operator. This central operator will act as the root. Binary tree है, so that means every root every vertex will be of degree 2. ठीक है, binary tree है, so every vertex will be of degree 2. So you can see ये जो central operator है प्लस, उसके लेफ्ट में एक ब्रांच होगा, उसके राइट में एक ब्रांच होगा. लेफ्ट वाला जो ब्रांच है, that branch will correspond to the expression on the left of that plus sign. राइट में जो ब्रांच है, that will correspond to the expression on the right of that plus sign. ठीक है, so how to draw the binary tree. पहले वो जो सेंट्रल ऑपरेटर है वो लिखा, उसके बाद उसके दो ब्रांचेस आ गए लेफ्ट और राइट में. अभी जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है, लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन मतलब जो ब्रैकेट में है 3 माइनस 2 इंटू एक्स, ये 3 माइनस 2 इंटू एक्स को खाली कंसिडर किया, तो यू कैन सी कि दैट माइनस साइन इज एक्टिंग एज माय सेंट्रल ऑपरेटर. राइट, प्लस के लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन में मेरा माइनस साइन is acting as a central operator, so I'll put that minus sign. Again, that vertex of a minus sign will have two branches, one will be on the left, one will be on the right. तो माइनस के लेफ्ट में खाली 3 है, तो वो उसका आ गया वर्टेक्स 3. राइट में वापस से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, दैट इज 2 into x. So I will write that operator x
दैट विल एक्ट एज माय वर्टेक्स, और उसके बाद मेरा लेफ्ट ब्रांच में x, राइट ब्रांच में 2। वो को तुम लोग इंटरचेंज करो तो चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव उसके लिए। ये हो गया मेरा प्लस का लेफ्ट साइड। अब ये जो सेंट्रल रूट है उसका राइट साइड, मतलब ये जो राइट वाले एक्सप्रेशन में आ जाओ, राइट वाले एक्सप्रेशन में यू विल सी के दैट माइनस will act as my central operator. Okay, minus will act as my central operator. तो वो माइनस आ गया as a vertex, and then फिर वो माइनस के लेफ्ट में you will see कि you have an expression x minus 2, and right में you will see कि you have an expression of 3 plus x। तो वापिस मेरे को वो ऑपरेटर डाल के बाद में मेरे दो ब्रांचेस बनेंगे लेफ्ट साइड में। राइट साइड में अगेन आई विल हैव एन ऑपरेटर प्लस, और उसके दो ब्रांचेस बनेंगे 3 एंड x। तो दिस इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मींस every vertex will be of degree 2 except the vertex at the bottom level। bottom level के vertex कौन से मेरे, ये जो एक 3 है, x2 x2 3 and x। all this जो ग्राउंड फ्लोर बोलते हो ना तुम लोग, ग्राउंड फ्लोर, वो है मेरा बॉटम लेवल का वर्टेक्स। तो ग्राउंड फ्लोर पे एवरी वर्टेक्स विल बी ऑफ डिग्री 1। ऊपर जाओगे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एवरी वर्टेक्स विल बी ऑफ डिग्री 2। दैट इज व्हाट बेसिकली इज योर बाइनरी ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सप्रेशन से बाइनरी ट्री कैसा ड्रॉ करना है। यू कैन डू इट इन उल्टा ऑल्सो, के ट्री दिया है और एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो ट्री दिया है और एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी ट्री का डायग्राम है उसमें नीचे से ऊपर ट्रैवल करो। ठीक है, उसमें नीचे से ऊपर ट्रैवल करो तो तुमको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। Right? This binary tree is clear? Yes, sir. Okay. 50-60% भी clear रहेगा तो it's okay. We will have one more example, I suppose. Yes. Now you can draw a binary tree of the second example. I had written it as homework, but you draw it now and show me. If it's possible, you can share the screen and show me. And I think अपना क्या बाकी है, एक example है, बस that's it. So this we will be able to wind up today. So you quickly draw the binary tree for the second example and tell me, then we will go to the means the next sum that will complete this unit. Sir, you're not audible. नहीं, अभी मैं तुम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी। तुम लोग Okay. सम सॉल्व करो, बाद में मेरे को बताओ, तो वी विल डिस्कस।
Sir, done, sir, but I done it in my notebook. Can I say it orally? You have logged in using your cell phone or a laptop? Sir, but I have done in notebook. नहीं अगर मोबाइल है तो यू कैन ऑन योर कैमरा एंड यू कैन No, sir. मतलब कैमरा ऑन करो तो फोटो दिखेगा करके. I have done, like, I have joined through laptop. अच्छा, okay. Tell. Then wait for 2-3 minutes. Let others also get the answer. Then we will discuss. Okay. सर चेक बॉक्स में भेज सकते हैं. हाँ चलेगा. चैट बॉक्स में भेजो तो भी चलेगा. Sir, can you scroll little up? स्क्रॉल अप मतलब तुमको प्रीवियस सम देखना है क्या? Yes, sir, बस. हाँ एक मिनट. हाँ सॉरी आई वाज जस्ट सीइंग उसका आंसर उसका इमेज देख रहा था. मैंने एक कंट्रोल आर प्रेस किया. आई थॉट वो जूम होएगा तो बंद. आई गॉट डिस्कनेक्टेड. वेट. Sir, it's okay. X into 2 plus 8. Okay. So what Sania has posted in the chat box, that answer is correct. You can refer that, and if you have any doubts related to that, you ask. And Sweetie, you can also just see what she has posted. If your answer is also same, then it's okay, or else you can discuss. Okay, sir.
Sir, it's same. Same, no? Okay. Okay. Fine. So I hope the screen is visible. Yes, sir. So we will discuss this example. Now what you can do is you can just take a screenshot of this example at this moment. Okay. And I hope the diagram is properly visible. The edges and everything. Yes, sir. Okay. The edges means the labeling of the edges. E1, E2, E3. Yes, sir. Yeah. So you can take the screenshot. Then I will scroll down and we will try to answer the questions. Done, sir. Okay. So basically we have a graph on how many vertices? We have a graph on how many vertices? 3. No, it's a graph on 6 vertices. Okay, it's a Yes, graph sir. on 6 vertices. Okay, now the first question. Write the vertex set and edge set. Give a table showing the edge point function. That is the first thing. Okay, we have to write down the vertex set and the edge set. Vertex set means capital V लिखना है. So V में we will be having 6 elements. V1, V2, V3, V4, V5 and V6. ठीक है. V में capital V में we will be having 6 elements. V1, V2, V3, V4, V5 and V6. Okay. Capital E, the set of edges. Set of edges में I will have 7 edges. Starting from E1 से E7 तक. Okay, again I repeat. Set of edges में I will be having 7 edges. Starting from E1 से लेके E7 तक. Because that are the 7 edges which are seen in the graph. So basically I have a graph on 6 vertices and 7 edges. Question says we have to give a table showing the endpoint functions. So what basically that means is अपने को टेबल में उसका edges लिखना है. So see, this is what is your set V and set E. Set of vertices and set of edges. V1, V2, Sir, V3, V4, V5, V6. Yes, Kajal. सर आई हैव अ डाउट. अगर V1 और E1 के जगह पे अगर हम लोग कोई नंबर या फिर अल्फाबेट डाल दे तो लाइक ABCD या फिर 1 2 3 4. चलेगा ना? मतलब हम लोग को V1 V1 लिखने का है कि वो पर्टिकुलर अल्फाबेट लिखने का है? एनीथिंग. ये ग्राफ में वो जो वर्टेक्स है उसको लेबल किया है V1 V2. तो हम लोग नीचे टेबल और कैपिटल V में V1 V2 लिखेगा. अगर वहां पे 1 2 3 4 या ABCD लिखा है तो हम लोग अकॉर्डिंगली वो आंसर लिखेगा. ओके सर, थैंक यू. ओके, तो नाउ ये टेबल बनाना है. टेबल में क्या करना है? वी हैव टू राइट डाउन द एज एंड द एज पॉइंट. तो फर्स्ट एज इसमें E1. तो बेसिकली एज पॉइंट मतलब E1 इज एन एज बिटवीन टू वर्टाइसेस. तो वो कौन से दो वर्टाइसेस है वो लिखना है. अभी यू कैन सी E1
E1 is an edge between V2 and V7. Right? E1 is an edge between V2 and V7. Sorry. E1 is an edge between V1 and V2. So मेरा edge है E1, तो उसका जो end point आएगा that will be V1 V2. This is what is my edge point function. Okay, E1 is an edge between V1 and V2. So this is what I have to make in this table. Like this, I have to do for all the edges. We said no, we have 7 edges. So for all the 7 edges, we have to write down the endpoints. So अभी E2, can you tell E2 का endpoints क्या है? V1 and V3. V1, V3, very good. What about E3? V1 and V3. Same, V1 and V3. So in this case, is your edge E2 and E3 parallel edges? Is E2 and E3 parallel edges? Yes. Okay, because they are the edges with the same end point. Now E4 का end points क्या है? V2 and V3. V2, V3. Okay, E5. V5 and V6. V5 and V6. Very good. What about E6? V6. E6. Take, see properly, see the diagram properly. E6. E6 is an edge from which vertex to which vertex? V6. Sorry, A diagram. V5 na? E6 V5 हाँ पे sorry है. sorry V5 E6 V6 is a loop on V5. तो हम लोग खाली V5 लिखेगा and then it is V6. E7 is basically a loop on V6. So this is what is the table. ठीक है? This table is clear? Yes, sir. yes Okay, so ये हो गया मेरा first part. Second question B में what it says? We have to find all the edges which are incident on V1. Incident on V1 मतलब having V1 as an endpoint. ठीक है? Edges which are incident on V1. That means having V1 as an endpoint. So tell me, what would be the answer? Edges E2. which are incident on V1. That means having V1 as an endpoint. E2, E3, E1. Okay, E2, E3, E1. Very good. These are the three edges having V1 as an endpoint. Right? Is it clear? yes Okay. All vertices that are adjacent to V1. Vertices which are adjacent to V1. V2 and 3 V2 and V3. V2 and V3. Okay, good. Edges that are adjacent to E1. Edges that are adjacent to E1. That means
adjacent to E1 मतलब Sir, Sir, your voice is breaking. end point. Sir, your voice is breaking. एक मिनट, एक मिनट. हाँ, now is it proper? Yes, sir. Yes. Okay. So I was telling edges. So first I'll just repeat. We were finding the edges that are incident to V1. Edges that are incident to V1 means having V1 as an endpoint. So that edges having V1 as an endpoint are E1, E2 and E3. Okay. Vertices that are adjacent to V1. Vertices that are adjacent to V1 are V2 and V3. Okay. Next, edges that are adjacent to E1. Now, edges that are adjacent to E1, that means जिसका end point is common to the end point of E1. Edges that are adjacent to E1, that means जिसका end point is common with end points of E1. E2 and E4. E2 and E2 and E4. E4. तो E3 भी होगा ना? Yeah, E3 सब होगा. So E2, E3 and E4. Okay, E2, E3 and E4. Is this clear? Yes, sir. Okay, all loops. How many loops are there in the graph? How many loops are there in the graph? V5, V6. E6, E7. Loop मतलब वो edge हुआ ना? V5 and V6 are the vertices जिस पे loop है. हाँ, sorry. हाँ. But loop E5, का है E6 and E7. E7. हाँ. Okay, E6 and E7 are the loops. Okay. Parallel edges. Parallel edges कौन सा है इसमें? E2 and E2 and E3. E3. Good. E2, E3 are parallel edges. Vertices that are adjacent to themselves. Vertices that are adjacent to themselves. V5 and V6. Right. Very good. Adjacent to themselves मतलब indirectly the question is कौन से vertex पे loop है? Okay. Indirectly the question is कि कौन से vertex पे loop है? ठीक है? Then isolated vertices. V4. 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 Very good. V4 is an isolated vertex. Fine. Is this example clear? Yes, sir. Yes. Okay. Now there is this ends this, but in the same example, I will ask you some more questions. You tell me the answer. Like, is the graph connected or disconnected? Disconnected. Disconnected. Okay. Graph is disconnected. How many components the graph has? How many components the graph has?
this graph is disconnected. How many components the graph has? 3. 3. एक ये जो लेफ्ट साइड पे कोन शेप है वो, एक जो आइसोलेटेड वर्टेक्स है, और एक वो जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज वर्टेक्स V5 एंड V6 वाला. So the graph has 3 components. Is this clear? Yes, sir. Okay. Tell me what is degree of vertex V1? 3. 3. 3. Degree of vertex V6? 2. 3. 3. V6 का डिग्री भी 3 है because you have a loop on V6. E7 is a loop, तो E7 का एक डिग्री 2 होगा एंड E5 का 1 होगा, तो उसका डिग्री 3 हो गया. ठीक है, उसका डिग्री 3 हो गया. व्हाट इज डिग्री ऑफ V4? What is degree of V4? No degree. No degree. So that is 0. Okay, degree of V4 is 0. So is this clear? Yes, sir. Fine. So this completes our unit 4. Tomorrow onwards we will start with the new unit. That is the last unit for this semester. So still we have some time. I will upload that in the team. Sir, By that time, by that time, if you have any doubts, you can ask. यस सर. सर, जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, आपने सेकंड वाला भी करेक्ट बोला. आई फील इट इज रॉन्ग. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड. I'll just see that. सेकेंड वाला मतलब वो RI वाला ना? हाँ, यस सर. That is 1 less than or equals to x less than or equals to 1 plus 1 upon I. यस Right? सर. हाँ क्या हो गया उसमें? सर, उसमें जो थर्ड वाला है ना, यूनियन ऑफ आई, मतलब 0 टू इन्फिनिटी तक, वो 1, आएगा कि 1, 2 आएगा? मतलब क्लोज इंटरवल 1, 2 क्लोज 1, इंटरवल. इंफिनिटी ना? हाँ एक यूनियन ले रहे हो ना तुम? हाँ, यूनियन. स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4 ना? I goes from 0 to 4. हाँ, तो 1 to infinity आएगा ना, क्योंकि वो बड़ा इंटरवल है 1 to infinity. यस. ओके सर. मेरे को लगा 1 to 2 आएगा. नहीं, अगर तुम यूनियन फ्रॉम 1 to 4 ले रहे हो, इफ यू इग्नोर दैट R0, तो तुमको 1 to 2 मिलेगा, क्योंकि फिर 1 to 2 बड़ा इंटरवल हो जाता है वो चारों में से. ओके, सर, कैन यू रिपीट? अगर तुम वो R0 जो है, R0 को इग्नोर कर रहे हो, यस यस. means if you are just taking R1, R2, R3 and R4, तो ओके. तुमको 1 to 2 आएगा, हाँ, ओके. क्योंकि फिर वो क्लोज इंटरवल 1 2 becomes the bigger interval ना. हाँ, यस. बाकी तो ठीक है. मीन्स एंड अगर R0
सॉरी वो जो 1 R0 इज इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी था, वो ओपन इंटरवल आएगा ना इंफिनिटी के बाद। हाँ, इंफिनिटी के साइड पे ओपन इंटरवल होगा, बट आई डिडंट सेड एनीथिंग बिकॉज एट योर लेवल उतना थोड़ा बहुत माइन्यूट चलता है करके, बट प्रॉपरली जाएगा तो इंफिनिटी पे ओपन होना चाहिए वो। हाँ, ओके सर। ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड। ओके फाइन। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? नो सर। ओके, तो मैंने ये आज वाला अपलोड कर दिया है पीडीएफ उसका, सो यू कैन रेफर। So shall I end the class? यस सर। Okay.